टॉपिक वाइज देखो এটা टॉपिक वाइज ओसीएस प्रीलिम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दे Welcome to all to Vanik Smart Class, and here it is. We have another session on CSAT, that is topic wise discussion we are doing. Another session, here it is. समस्त को जानी रखिबा दरकार आज हमें को टॉपिक रे पहुंची सारचे कोडिंग डिकोडिंग हमें समाप्त कर सारचे सब समाप्त हो सारची अप टू आर्गुमेंट रैंकिंग ऑर्डर टेस्ट नाउ वी आर हियर रिलेटेड वीडियोस सब देखिया पई इंफॉर्मेशन दिया जाउची सब डिटेल्स पढ़ा जाइछि विथ ऑल एग्जांपल्स एबे हमें ए टॉपिक रे अछि स्टेटमेंट अजम्पशन इट्स क्वाइट इंपोर्टेंट टॉपिक जनरली क्वेश्चन पचरा जाइछि एग्जाम्स रे सो व्हाट इज एन अजम्पशन टॉपिक रो ना अछि स्टेटमेंट अजम्पशन इज नथिंग बट अ गेस एक्चुअली ये सब डेफिनेशन हमें ध्यान रखिए प्रथम एन assumption is something supposed or taken for granted. Assumption is nothing but a guess for a particular situation. If the basic expectation qualifies in as per the given statement, then it can be a valid assumption. नरेटर जो इंटेंशन रे स्टेटमेंट लिखिचन बा सिचुएशन टा जो इंटेंशन को इंडिकेट करूची जदि सेटा लिखा जाइछि ताले हमें तक गोटे वैलिड अजम्पशन बोली कहि परिबा अजम्पशन इज अ प्री केस व्हाइल कंक्लूजन इज अ पोस्ट केस एज पर द सिचुएशन सो इट्स अ काइंड ऑफ प्री केस फ्रेंड्स समस्त याकू जनरली ट्रीट हे जाय कि दुइटा जाको समान अजम्पशन और कंक्लूजन बट दे बोथ आर बैडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ओनली बेस्ट डेफिनेटली ऑलवेज वर्ड्स आर जनरली प्ले अ नेगेटिव की रोल एगुडा जदि लेखा थाए अजम्पशन रे ताले हमें तको जनरली गोटे नेगेटिव बोली भाबू किंतु शब्दर किंबा सेंटेंस रो किंबा थॉट प्रोसेस रो कोनोसी लिमिटेशंस नथिबा जगु एई ट्रिक को हमें 99.99% पर्यंत ही ट्रस्ट करा जाई पारे प्रोबेबली मे बी लाइक वर्ड्स प्ले पॉजिटिव की रोल बट जानी रखिबा दरकार लेखार कोनोसी अंत नाही कि भी केमती भी लिखि परिबे त माने ओनली थाई कि पॉजिटिव भी हे पारे ओनली थाई कि नेगेटिव हे पारे बट जनरली हमकु जदी कनेक्ट करिवार अछि ताले ओनली जदी लिखा हिची माने एटा नेगेटिव हे जाय सिचुएशन जहां थाउ ना कहीं कि नेगेटिव हे जाय अजम्पशन बट आमे क्वेश्चन सॉल्व करिबा आरो फंडामेंटल जानिबा ये सब थिला डेफिनेशन माउथ रे कहि रखु जे अजम्पशन इज समथिंग सपोज्ड और टेकन सपोज मु कहली कि लेट्स से लेट x equal to 5 suppose x equal to 5 एमदी मैथमेटिक्स रे लिखा जाय suppose x equal to 5 what does it mean x equal to 5 is it x equal to 5 answer is no आमे कोनोसी टारगेट रे पहुंचा पे आगरो अनुमान करूचे कि x रो वैल्यू 5 मु कहली इट इज बैड वेदर आउटसाइड भुवनेश्वर सपोज आई एम सेइंग इट इज बैड वेदर आउटसाइड भुवनेश्वर सो व्हाट कैन बी द करेक्ट अजम्पशन इट मे बी रेन्ड आफ्टर सम टाइम सो जो केस टा हेनी होबा को बाकी अछि आमे गेस करछे एज पर द गिवन सिचुएशन आमे ताको कोन कहबा अजम्पशन कहबा ठीक अछि तो ये सब डेफिनेशन गुडा को इंडिकेट करछे अजम्पशन रो डेफिनेशन क्वालिफाई करछी एटा बुझी जिवा दरकार आर कोनोसी शॉर्ट ट्रिक्स न थाय जेतु थियोरेटिकल टॉपिक थाय आर बुझिवा को पड़े कि स्टेटमेंट रे कोन लिखा अछि जदि हमें स्टेटमेंट क्लियरली बुझी पाले ताले हमें अजम्पशन को क्लियरली जाय परिबा कोनोसी असुविधा होबो नाही सो ध्यान देबे आउथरे लास्ट पार्ट रे हम अछि एन अजम्पशन इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशन इज नथिंग बट अ गेस if the basic expectation qualifies as per the given statement then it can be a valid assumption is a pre-case friends pre-case that has to be happened not yet happened that's why it's a kind of pre-case but conclusion is a post-case माने जोटा ही सारी as per the situation only based definitely always words are generally play a negative key role in the assumption while probably maybe like words play positive key role सो ध्यान देबे 99.99% एई सब वर्ड क्वालिफाई करे बट एबे भी 0.01% बाकी अछि हमें स्टेटमेंट को भलो से पढिबा उचित देखिबा फर्स्ट एग्जांपल कोन दिया जाइछि टू गेट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड ध्यान देबे टू गेट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड सब बेले मु कहूछि कि सिचुएशन बनेवाटा बेस्ट प्लान होय तामाने ये को परिस्थिति रे लिखा जाइथिबो को सेंटीमीटर लिखा जाइथिबो
जदि आम से एनालिसिस करि परुचे ताले अजम्पशन आम आराम से एनालिसिस करि परिबा बा आंसर दे परिबा टू गेट अ फर्स्ट क्लास ता माने एटा कोनोसी टीचर को पचरा जिबा परे स्टूडेंट को रिप्लाई दिया जायथिबा किंबा जने जानिथिबा व्यक्ति आ जने पचारिथिबा व्यक्ति को रिप्लाई दवार सिचुएशन जदि आपण फर्स्ट क्लास पाया पई एग्जाम रे फर्स्ट क्लास पाया पई चेष्टा करूचंती टू गेट अ फर्स्ट क्लास यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड बहुत परिश्रम करिया को पड़िबो एई टाइप रो सिचुएशन हमकु दिया जाय छै एई सिचुएशन जहा को इंटेंड करूछ जो इंटेंशन एटा लिखा है सेटा जदि आ भितर थाए ताले आमे ताको करेक्ट अजम्पशन कहबा अदरवाइज नॉट गेटिंग फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन इज डिजायरेबल कोंदु एटा फर्स्ट क्लास पाइबाटा कोड ना कोड इच्छा अछि ना नहीं इच्छा नथिले केबे पचरा जीवनी सो इंटेंशन सैटिस्फाइड इन ऑप्शन नंबर आई मीन अजम्पशन नंबर 1 आमे मैक्सिमम आंसर ऑप्शन रखिछु सी साइड रे तो चारिटा थु बट एबे आमे मैक्सिमम आंसर ऑप्शन रखिछु एति पई ताकि एटा कोनोसी प्रकार कोनोसी एग्जाम को भी आमे कनेक्ट करि परिबो फंडामेंटल विल रिमेन सेम इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सो पांचटा ऑप्शन होची मैक्सिमम आंसर ऑप्शंस hard work result in success why we are talking about you have to work very hard so there is a connection from hard work to success that's why number 2 is also satisfied दुईटा जाक satisfy करूची करेक्ट आंसर इज वो ऑप्शन नंबर ई देखो तो ऑप्शन नंबर ई रे कोन लिखा अछि ऑप्शन नंबर ई रे लिखा अछि बोथ आर implicit माने होची जोटा क्वालिफाई करिवो सेटा को implicit कहले explicit is the opposite of implicit ता माने ये दुईटा जाक अजम्पशन कोटी ना कोटी हमरो इंटेंशन नैरेटर देथिबा क्वेश्चन रो बा सिचुएशन रो इंटेंशन को सैटिस्फाई करूथिबा जगु दुईटा जाक कोटी ना कोटी क्वालिफाई ही सारी छी नेक्स्ट एवरीबॉडी लव्स रीडिंग एडवेंचर स्टोरीज so we have idea about everybody and the interest area of everybody so adventure stories is the only reading material only plays a negative key role आमे कोइ परिबा कि केवल गोटे मात्र रीडिंग मटेरियल adventure stories is there any authentic information as given in the statement answer is no that's why number 1 is going wrong so ame kotha aitile only ta negative play kore negative he jaye assumption ta ko negative kore de so ebe dekhi paribe eta negative he sarichi nobody loves reading any other material no idea about any other material amo pakhare konosi information nahi other material that's why number 2 is also not implicit so both are not implicit correct answer is option number D next question जते क्वेश्चन अधिक सॉल्व करिवा सेते हमरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होय इट्स माय बिलीफ सो 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन फॉर दिस टू क्वेश्चंस जो माने भी ऑनलाइन अछंदी से माने तंकर आंसर दियंतु सो दैट हमें आंसर को और क्लैरिफाई करि परिबा जो माने ऑनलाइन अछंदी से माने ट्राई करंतु आंसर दा पे टेक्स्ट मोर ऑन अछि मु देखि परिबे आपन मनकर मेसेज so please text it okay so here it is all the teachers are hereby instructed to reach the institution by 9 am some of the teachers do not माने confirm कराई छी कि किछि जन आसुनांदी जोटी कि हमें टाइम रे आसिला परे भी एक कथा कोआ जाय पारे सेति पे नंबर 1 टा फॉल्स हिजो number 2 teacher will follow the strict warning given in the notice this is ultimate intention of any kind of notice warning such kind of steps this is ultimate intention so number 2 is correct number 1 is wrong so correct answer of the given question is option number B
the next meeting of the governing board. Question number 4. The next meeting of the governing board of the institute will be held after 1 year. So governing board ro meeting, you can say AGM, annual general meeting, suppose lekha aichi ki gote barsho pore will be held after 1 year. What exactly we can assume? The institute will remain in function after 1 year. This is absolutely correct. The governing board will be dissolved after 1 year. Dissolve केबे हबो तार कोनोस इंफॉर्मेशन नाही. आमे केवल एति जानले जे मीटिंग टा गोटे वर्ष परे हबार माने होची से पर्यंत माने गोटे वर्ष परे हमरो कंपनी बा जो भी इंस्टीट्यूट अछि सेटा फंक्शन रे. So option number A should be the correct answer. Next question. 2 minutes for everybody to give it a try and tell me the answer. If you want to study management, join Institute X as advised to be. Advice रो देखो सबू वर्ड सबू एक्टिविटीज रो इंटेंशन थाए कई जदि का को एडवाइस करूची ता माने सेटा तोर प्रैक्टिस न होई पारे बट एडवाइस दोची माने से सुनिबो एटलीस्ट सुनिबो से इंटेंशन रे एडवाइस दिया जाए. दिस इज नॉट सेम एज ऑर्डर मानिबा इंटेंशन रे दिया जाए. तो प्रत्येक वर्ड आमे जोड़ा भी सब लिस्ट बनेबो. सपोज मु कहबी कि रिक्वेस्ट रो इंटेंशन जहा अपील रो इंटेंशन ऑलमोस्ट सेया किंतु ऑर्डर रो इंटेंशन सेया न है जहा आमे इंस्ट्रक्शन रो इंटेंशन रे कहथौ. तो ये समझ वर्डिक्ट रो इंटेंशन जहा आमे कहि परिबा कि एटा अपील रो इंटेंशन सागर सेम हो. एटा जो इंटेंशन रे करा जायता वर्डिक्ट से तंकरो राय सुनेले जज तंकरो राय सुनेले एटा जो इंटेंशन रे थाए वर्डिक्ट जो इंटेंशन रे थाए से इंटेंशन रे केबे रिक्वेस्ट थिबो कि नो. सो से माने निजो निजरो स्थिति अनुଯାयी सेमानकर इंटेंशन बी डाइवर्ट होए. एबे हमें कहबो जे एडवाइस दिया जाय एडवाइस करछि बी को ताले बी निश्चित भाबरे सुनिबो ए इंटेंशन रे को जाय छै. वी आर इन प्री केस फ्रेंड्स प्री केस. तो ध्यान देबे सुनिबो हमें सही जे कहि परिबो सुनिला परे से कथा को से मानिबो ओबे अटेंशन दबा जहा लिसन रो माने से न होई पारे ओबे रो माने से न होई पारे. एमान समस्त अलग अलग जगह रे अछन. तो एबे फिलहाल हम पकरे एडवाइस रो शब्द दिया जाय छी एज एडवाइस टू बी. ए त माने बी को एडवाइस करू छी. तो एटी जानिबा दरकार बी निश्चित सुनिबो मानिबो कि नै हम पकरे कोनोसी रिकॉर्ड नाही. So be listen to his advice. This is absolutely correct. एमती के हबनी कि मु आपण मते पचारले मु कहिली आ ए इंटेंशन रे कहली कि केही सुनिबेनी नाही सुनिबे बोली ही कह जाय. Institute X provides good management education. That's why A referred X management education. ता माने A रो एडवाइस थिला B को कहा विषय रे X रे जॉइन करिया पय. X गोटे इंस्टीट्यूट रो ना ता माने X टा भलो प्रोवाइड करछु बोली ही से ताको रेफर करथियो बोली हमें कथा कहि परियो. क्वेश्चन नंबर 6. A sentence in the letter to the candidate called for written examination. You have to bear your expenses on travel etc. If not clarified, all the candidates may claim reimbursement of expenses. Absolutely correct.
सेंटेंस कौन लिखा है कॉल लेटर यू हैव टू बियर योर एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवल एटसेट्रा ता माने आपण जहां भी आसीबे जोथरे आसीबे इंटरव्यू दवा पे समस्त खर्च आपनकर लॉजिंग बोर्डिंग जहां भी खर्च होला फूडिंग से सब खर्च आपनकर बोली एचआर मैनेजर कॉल लेटर रे एटा लिखि दै चंदी ता माने लिखिबार इंटेंशन कोन अछि जदि से क्लारिफाई न करे थांते समस्त रिइंबर्समेंट मागिबा पई बोध आसी जाय थांते सेति पई से माने दबा पई आरमुर ही डिनाई कर देले मेनी ऑर्गेनाइजेशन रिइंबर्स द एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवल एट कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर अटेंडिंग बिल्कुल करेक्ट अछि बहुत गुडे ऑर्गेनाइजेशन जदि काम करि न थांते केही जदि न देई थांते ताले हम एक कथा स्पष्ट होइतांता जे कि मागिया पई भी आसी न थांते तो किछि जण दियंती सेति पई किछि जण मागिया पई आगु को आसी पारंती सेति पई हमें हमरो लिखिया पड़ला कि हमें एक्सपेंसेस बियर करिवु नाही सो दुईटा को करेक्ट हे जिवो करेक्ट आंसर हे जिवो ई एथरे भी दुईटा को करेक्ट अछि करेक्ट आंसर इज ई नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज 2 minutes Okay, the state government has unilaterally increased by 5% octroi on all commodities entering into the state without seeking the approval of the state government, central government. ता माने state government जो action नवा पई चाहउचंती थिबो the state government may able to solve the decision सेति पई से ताकर बिना परामर्श रे भी काम करिया पई जाउचंती आउ जनरली octroi जोटा सेटा state government रो अंडर रे हिताय octroi माने गोटे टाइप रो टैक्स एटा कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट रो ओनरशिप थाइ थे द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एग्री टू सपोर्ट ए कथा हम कहउतली ता माने गोटे फॉर्मल हिडन एग्रीमेंट थिबो बोली से माने ए काम करूचंती जदी एथरे कोनोसी सख्त नियम थांता ताले से माने ए काम केबे करि न थांते निश्चित भाबरे अप्रूवल नबा को पड़ी थांता ताले दीटा जाको ठीक हे जिवो करेक्ट आंसर हे जिवो ई नेक्स्ट क्वेश्चन 2 minutes समस्त ट्राई करंतु ट्राई कले जना पड़िबो मिस्टेक कोडी होची मिस्टेक हेले आउरी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुए in the recent held all India Commerce Conference the session on management of service sector in India surprisingly attracted a large number of participants and also received a very good media coverage तामाने एई जो कॉन्फ्रेंस हेची सेतरे मीडिया कवरेज भी बढ़िया थिला लोक मानकर रेस्पॉन्स भी बढ़िया आसी assumption कोन मीडिया इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव हमको जणा नै मीडिया सब बेले पॉजिटिव थाय सर्विस सेक्टर पे इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क दैट्स व्हाई नंबर 1 इज फॉल्स नंबर 2 द सर्विस सेक्टर इज मैनेज्ड प्रॉपर्ली इन इंडिया still it's a question mark there is nothing said about this kind of information neither the intention of the statement is to connect whether service sector is managed properly in India or not so both you are expected to be frank and objective while writing your self appraisal report generally appraisal report ta jodi आउ किए लिखि दियंती suppose गोटे पर्सन पई A पई B suppose appraisal report लिखुची then there is no issue of A but जदी A कोई दिया जीवो निजे निजरो सेल्फ appraisal report लिखिया पई
ताले कोटी ना कोटी टिके माने स्ट्रेट फॉरवर्ड होबा पई टिके साई नेचर तापरे कोटी ना कोटी टिके निजरो खूबिया लेखिया पई लोक माने जनरली टिके हेजिटेशन हुए से कथा लेखा जाईची स्ट्रेटली ऑब्जेक्टिव रहबा दरकार आउ फ्रैंक रहबा दरकार इंस्ट्रक्शन फॉर राइटिंग सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट पई ए इंस्ट्रक्शन दिया जाईची unless concerned people may tend to be little shy कथा कहउथली and less objective while writing their self appraisal report ताले एटा ठीक लिखाई छी जदि न कहै तांता ताले लोक माने एमती करि न थांते सेत पई को जीवर इंटेंशन साफ होची नंबर 1 रे every self appraisal report helps the person in his further development सब बढ़िया लिखा अछि किंतु आम पाखरे इंस्ट्रक्शन कोनोसी पर्टिकुलर गोटे अप्रेजल रिपोर्ट रो इनफॉरमेशन दिया जायछि एतरे समस्त अप्रेजल रिपोर्ट रो इनफॉरमेशन जेहेतु नाही सेति पे एवरी सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट जो कथा लिखा जायछि सेटा कोड ना कोड लैक होछि ताले नंबर 2 फॉल्स हे जो एवरी अप्रेजल रिपोर्ट एवरी सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट रो कोनोसी इनफॉरमेशन हम पकड़ नाही without any kind of hint or information we cannot guess anything as guess cannot be anything mark my words guess cannot be एनीथिंग जहाँ भी अपन गेस करिवे सेटा स्टेटमेंट रे दिया जाइथिबा इंफॉर्मेशन को क्रॉस करू नथिबा दरकार नहीं तो अजम्पशन भूल हो नेक्स्ट 2 minutes हियर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 we are in 10 question number 2 minutes Let's go for the answer then. It is through participative management policy alone that indiscipline in our industries can be contained and quality of life ensured to the workers. तामाने कोनोसी participative management policy रो दुईटा टार्गेट अछि गोटेला indisciplinary activities को कंटेन करूची तापरे poor quality of workers poor quality of life of workers एमाने बी आर भितरे कंटेंट हेबे तामाने दुईटा डिफरेंट एस्पेक्ट को ए पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पॉलिसी कंटेंट करूची ता ऊपर काम करियो अजम्पशन हमें आरो कोन नै परियो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन आवर इंडस्ट्रीज इज बेटर फ्रेंड्स देखो जदि बेटर अछि ताले भलो करियो पई कोन दरकार तामाने एटा कॉन्ट्राडिक्शन आनुची आइडियाज रो अगेंस्ट रे को जाउची इफ बेटर देन व्हाई व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पॉलिसी indiscipline results in poor quality of life this is also wrong because there is nothing said about the cause and effect relation between these two जदि हमर कोनोसी इंफॉर्मेशन ए दुई जन को कनेक्ट करके दिया जाय थांदा कि पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर्स पुअर क्वालिटी लाइफ ऑफ वर्कर्स इज बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज जदि किछि भी एमते हिंट थांदा ताले आमे सेकंड टाइम प्लान करि थांदे फॉर द टाइम देयर इज नथिंग सेड अबाउट एनीथिंग regarding the cause and effect relation between indisciplinary activities and quality of life ensured जोटा लिखा है सेटा poor quality of life of workers थिला जाको एन्श्योर करा जबो आउरी भलो करे पे प्लान करा जबो सो आ भितरे कोनोसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नाही सेति पे 2 नंबर टा भी फॉल्स हिजबो करेक्ट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबरिंग है नहीं इतरे जेतु प्रैक्टिस चलची माने फंडामेंटल रो पार्ट चलची आपर प्रैक्टिस क्वेश्चन आसीबो नंबरिंग देबो 2 minutes हियर इट इज
Here it is, many people have expressed surprise. जो word कथा मैं कहूतली surprise हे जिवार माने ता माने किछि unexpected जिंस हेथिवा जो many people have expressed surprise as the princess has broken the royal tradition of marriage by choosing commoner as her life partner. People expect royal families to observe customs and traditions. बिल्कुल जदि से माने expectation न थांता केबे भी से माने surprise हे न थांते. People still value purity, royal blood and status when it comes to a marriage of members of royal family. देखो वैल्यू जदि न दउथिबे ताले सरप्राइज होबा न होबा स्वाभाविक. वैल्यू दउचंती सेति पे सरप्राइज हले. वैल्यू दबार माने होची कोटी ना कोटी से मनकर एक्सपेक्टेशन थिला ही ए कथा बुझी जिवा दरकार. सो जदि भाबंतु आपनकर सानो भाई एग्जाम रे क्वालिफाई करि गले तो एटा कोटी ना कोटी आपन सांग ही पढुतले आपनकर एग्जाम हेनी किंतु तार एग्जाम एटा कोटी ना कोटी सरप्राइज होबा स्वाभाविक. किंतु सपोज कोनोसी अलगा कैडर रे कि जने टॉपर हेले ताले किछि नै एज एक्सपेक्टेड दिस इज कि सिविल सर्विस होउची माने कि जने टॉपर हेबे खेल होउची माने कि जने हारिबे कि जने जितिबे दिस इज एज एक्सपेक्टेड. बट भाबी नथिबा जिंस जदि होउची दैट मे बी इन पॉजिटिव वे दैट मे बी इन नेगेटिव वे. जदि ए टाइप रो सिचुएशन होउची ताले कोट ना कोटी आमे ए कहबा जे एटा सरप्राइज होबा स्वाभाविक. सो दुइटा देखो करेक्ट ही सर्च. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. Next question, 2 minutes. Here it is. The chairman and secretary of the housing society have requested society members to use water economically to help society to save on water tax. ता माने पानी जेतिकी दरकार सेतिकी यूज करिया पे जे कोनोसी जिंस जेतिकी दरकार आवश्यक अनुसार खर्च करिवा आवश्यक अनुसार व्यवहार करिवा पई व्यवहार करिवार सिस्टम को बा प्रोसेस को हमें इकोनॉमिकली यूज करिवार प्रोसेस बोली बुझिबा. तो निश्चित भाव में ये वाटर टैक्स को सेव करने प्लान करा माने इकोनॉमिकली यूज करने कहुई जोटा कि टैक्स सेव करने हेल्प कर आमे यही टाइप रो जे चेयरमैन सोसाइटी बा सेक्रेटरी अच्छी से माने रिक्वेस्ट करछन माने रिक्वेस्ट अल्टीमेट इंटेंशन हला या जे मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर लाइकली टू फॉलो द रिक्वेस्ट. ता माने मु रिक्वेस्ट करिवार माने होची समस्त सुनिबे बा अनुरोध रक्षा करिवे सेति पई मु कहिथि. ताले ता पर केस हमर अजम्पशन रो कायदा कानून भीतर नाही काहेकि ना से माने ता परे सेटा को माननी की कंटिन्यू करिवे न करिवे दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट अजम्पशन. अजम्पशन माने हमें केवल प्री केस रे रहियो. It is desirable to reduce expenditure whenever possible. This is also correct. Both are correct. Correct answer is option number E. Next question, here it is, and 2 minutes. 2 मिनट आपन को समय दिया जाउची क्वेश्चन सॉल्व करिया पई सो दैट आपन इन्वॉल्व भी हे पाइबे आ मु जा बुझौची सेटा बुझी पारिबे.
here it is. The economic prosperity of any nation is dependent on the quality of its human resources. Now the point is how human resources is important to achieve economic prosperity, right? Human resources jete properly use hobo desar sete growth hobo. It is possible to measure the quality of human resources of the nation. That's why we have created a parameter that human resources, how important. So human resources is ultimate parameter to achieve economic prosperity. So number one आमे एक कथा कहि परिबा जे suppose मु कहली कि USA is the largest GDP maker in the whole world. So GDP can be measured is ultimate assumption of the given question. So it is possible to measure the quality of human resources. That's why we are talking about the quality of human resources. So number one is correct. Number two, achieving economic prosperity is a cherished goal of every nation. ता माने प्रत्येक देशर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव करबा गोटे cherished goal बोली सेटा एतिकी इन्फॉर्मेशन नु जणा पडुनी बिकॉज द मुद्दा ऑफ दिस स्टेटमेंट ए पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन रो पॉइंट सेंटर पार्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेस, हाउ ह्यूमन रिसोर्सेस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. दैट्स व्हाई नंबर 2 इज इनकरेक्ट वन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज 2 minutes. The campaign of keep your city clean started by the civic council did not evoke any response from the citizen. तो आम डायरेक्ट कहि परिबा कि कैंपेन टा जदी रेस्पॉन्स कैंपेन को न मिलिला, शहर को साफ करिया पई जो कैंपेन स्टार्ट हेतला ताकू रेस्पॉन्स मिलिला नाही सिटीजन मानक ठरो, ता माने आम एक कथा कहि परिबा कि लोक माने चाहू नांती शहर साफ हो बोली आम कहि परिबा नाही. डेफिनेटली हे पारे से माने व्यस्तता जीवन भितरे से मानको रेस्पॉन्स दवा पई टाइम से मानको हेनी किबा से मानको बखरे अवेयरनेस पहुंचनी. The civic council has failed this campaign is correct one. So option B is the right answer. Okay. So आजिरो क्वेश्चन एटी समाप्त होची, आजिरो टॉपिक एटी समाप्त होची. हमें यार फंडामेंटल पढिले आउ क्वेश्चन डिस्कशन कले. That's all from today's session. Thank you so much. Have a great day.